Uh, Hello, am I audible? हाँ सर आप ऑडिबल हैं Okay, सुन पा रहे हैं मुझे हाँ okay. हाँ हाँ यस ठीक है. So आज हम मतलब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो रिग्रेशन लाइन है that is like yi equals to beta naught plus beta 1 x plus epsilon I. So that was the regression line of py1x. So in this class we will start from sum of squares error, or you can say like residual sum of squares. So what is residual sum of squares? It's nothing but the sum of squares of all errors. That is EI. Where what is EI? EI is our the value of the difference between the original or the actual value and the predicted value. This is the error. मतलब जब हम रिग्रेशन लाइन यूज करते हैं तो हम लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर वाई आई का वैल्यू, इन दैट केस हमारे पास एक एरर जनरेट होता है क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी रिग्रेशन लाइन फिट नहीं हो सकता है. दैट्स व्हाई ei is our error. So sum of ei square, that is our sum of yi minus yi hat इसका whole square. So yi hat is our predicted value of y. So we can just replace yi hat by the equation. So if we put, or if you use y equals to a plus bxi, where what is our a is our the, or you can like a hat is the estimated value of beta naught, and b hat is equals to the estimated value of beta 1. So if we use that term, we will get b naught minus b1x. So that terms become the sum of squares. Ultimately that term will become sxx minus b1 square sxx. Sorry, or you can write syy. Okay, so if you calculate this thing, you will get that. Okay, so just you can like you can use some replacement for um, b naught. So we can write b naught as y bar minus b1 x bar. So if you replace that term, you will eventually get this. So डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. बट व्हाट वी आर गेटिंग द value of the residual sum of squares, that is equals to syy into b1 square sxx. तो दिस इज द फॉर्मूला. सो हम लोग मतलब कोई जब भी एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज अ residual sum of squares. Okay, so that becomes syy minus b1 square sxx. so इसका और भी बहुत सारा फॉर्म है. so मान लो we can write b1 equals to sxy by sxx. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो रिग्रेशन स्लोप है उसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू दिस. सो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे, we will get syy minus sxy by sxx उसका whole square into sxx. So that thing we will get. So ultimately that becomes syy minus sxy उसका whole square, 1 sxx रहेगा और एक निकल जाएगा. So that term will be like this. Okay, so you can eventually write it as syy minus b1 into sxy, क्योंकि b1 equals to sxy by sxx होता है. So ये जो फॉर्म है हम लोग इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को भी हम लोग यूज कर सकते हैं. दोनों ही फॉर्म हम लोग यूज कर पाएंगे. अगर कोई क्वेश्चन पे हम लोगों को रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना पड़ा तो हम लोग यूज कर लेंगे ये चीज. ठीक है, सो द थिंग इज ये जो हम लोगों ने रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स देख रहे थे, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. ओके, that residual sum of squares has a
chi-square distribution. So the form we can write RSS by sigma square. What is sigma square? Sigma square is the variance of y. So RSS by sigma square that follows chi-square with degrees of freedom n minus 2. Okay, why n minus 2? Because here we are actually considering the variance term. That's why. Okay, so the question is, or sometime you might ask the average of residual sum of squares or expectation of residual sum of squares. So expectation of residual sum of squares by sigma square that is equals to n minus 2 using chi-square distribution. chi-square distribution का मीन क्या होता है? जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वही chi-square distribution का मीन होता है. That's why you can write expectation of RSS by sigma square equals to n minus 2. So that implies expectation of RSS that is equals to sigma square into n minus 2. That term is like we can get when we have the number of samples or number of samples in the data set and the sigma square. What is sigma square? Sigma square the variance of y. Okay, so this is the thing. Okay, so now one more thing is that कि हम लोग सिग्मा स्क्वायर जो है उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल सकते हैं. कहाँ से? So from here, if we consider this as 1, that means sigma square equals to expectation of residual sum of squares by n minus 2. So we know what expectation of t equals to theta. Then we can say that t is the unbiased estimator of theta. Using that logic, we can write ki our unbiased estimator of sigma square that is equals to residual sum of squares by n minus 2. So we can use S square. S square is our unbiased estimator of sigma square. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? S square that is equals to residual sum of squares by n minus 2. So that is very easy to understand कि हम लोग के पास जब वैल्यू अवेलेबल नहीं है, what is the variance of y? जब अवेलेबल नहीं है, then we can use the sample variance which is obtained by the residual sum of squares by n minus 2. Okay, so that's why जो सिग्मा स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं कि model dependent estimate. Okay, why it is model dependent? Because the 2 degrees of freedom that we have 2 degrees of freedom. So these 2 degrees of freedom are lost due to estimation of b0 and b1. दोनों का हम लोग estimate कर रहे हैं. So that's why we get or we lost 2 degrees of freedom. So since S square depends on the estimate of b0 and b1, so we can say it is a model dependent estimate. Okay, so that is the thing we have to remember. Okay, S square equals to residual sum of squares by n minus 2. So these are basic formulas. So whenever we need, we have to use that. Okay, also we can find variance of b0 जो भी हम लोगों ने पहले निकाला था कि क्या निकाला था लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि variance of b0 that is equals to sigma square into 1 by n plus x bar square by sxx. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला था कि variance of b0 का वैल्यू क्या आना चाहिए. ठीक है, so the estimator of variances of b0 and b1, this can also be obtained by replacing sigma square by its estimate sigma hat square equals to s square. अगर हम लोग इसको replace करेंगे, so we can get the variances of b0 and b1. So in that case, variance of b0 hat that will be equals to s square 1 by n plus x bar square by sxx. So easily we can get the variance of b1 also. Okay, so variance of b1 क्या आया था? Sigma square by sxx ये आया था. So we can easily write variance of b1 hat that is equals to s square by sxx. Okay, so the thing is कि हम लोगों ने
हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली फाइंड using the S square. So it is model dependent. Mainly the variance is also model dependent. Okay. So हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई सिग्मा स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो इन दिस केस यूज कर सकते हैं ये वाला चीज. Next thing we have to understand is if there is no intercept, that means we have a regression line y I equals to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. And in that case, suppose we do not have beta naught, or we can say beta naught is 0. Okay. So in that case, we will get a regression model like yi equals to beta 1 xi plus epsilon. Okay. So for example, in when we analyze a relationship between the velocity of a car and the acceleration, so velocity depends on the acceleration, and when acceleration is zero, then velocity is zero. Okay, so that's why we can say like when acceleration matlab x is zero, then y is also zero. So there is no intercept term. Since there is no intercept term, that's why y is equal to y is coming zero. So okay, so this is called no intercept model. Okay, or we can say no intercept regression model. So in that case, we have only one parameter beta 1, and we can easily estimate beta 1 by the OLS method. And in that case also, the beta 1 will be like similar form of the previous one. Okay, so we can easily draw that using the OLS method. I am just skipping that part. Main part is that uh, we can also find another approach, that is the maximum likelihood method. Okay, so that thing we have to understand the MLE. Okay, so the basically what we are trying to find, we try to find the value of the estimator using the likelihood function, and considering the likelihood function, take the derivative and equating with 0, we get the MLE of that particular parameter. Okay, so how we are going to use for regression line. Okay, so that is the basic question. Okay, how we are going to use the regression line, because we are trying to find the estimate of beta naught and beta 1. We have already done that. Using the OLS method. Okay, so now we are going to find that using our MLE. Okay, so the regression line yi equals to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. This is the regression line. Okay, now to use the MLE, we have to use another form, that is the epsilon. So what is epsilon? Epsilon follows normal 0 comma sigma square. Okay, so लुक देखो, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एमएल यूज करने के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए, और ये लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा जो रिग्रेशन लाइन है इधर से मिलेगा नहीं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, so we have the probability distribution of the epsilon I. Okay, so since we have the probability distribution of epsilon I, so we can easily find the probability distribution of yi, because yi is like epsilon I plus some constant. Okay, so yi will follow normal beta naught plus beta 1 xi and epsilon I square. Oh, sorry, sigma square. Okay, so this is basically we are considering beta naught plus beta 1 y as a constant with respect to epsilon error. Okay, because we have already seen that there is no relationship between the error and the estimates of beta naught beta 1, covariance was 0, so we can easily get that. So now yi follows normal and with the mean beta naught plus beta 1 xi and the variance sigma square. Using that, we can find the likelihood function
of our given observation, that is L, the likelihood function we can write as L, and the function is about beta naught comma beta 1 and also sigma square. Why sigma square? Because we have already considered sigma square in our distribution, normal distribution, so we can easily write that, because sigma square is also the parameter, so we do not have any idea about sigma squares also. Okay, that's why we have to use, so that is equals to multiplication over I equals to 1 to n 1 by 2 pi sigma square to the power half e to the power minus 1 by 2 sigma square, and what is the value? X minus mu square. Okay, so that's why we can write yi minus beta naught minus beta 1 xi, it's the whole square. Okay, so that's why you using the likelihood function we can get the ln L beta naught beta 1 sigma square. That will be also the log function of this, so that will be equals to minus n by 2 ln 2 pi minus n by 2 ln sigma square, so sigma square बाहर आ जाएगा, minus 1 by 2 sigma square into sum over yi minus beta naught beta 1 x, so that term will come. Okay, so now we have a, log likelihood function, and we have to find the estimate of beta naught beta 1 and sigma square. So we are going to take a derivative ln L by del beta naught and equating with 0, del ln L by del beta 1 equating with 0, del ln L by del sigma square equating with 0. ये तीनों लेने के बाद, मतलब ये तीनों इक्वेशन को लेने के बाद we will get the maximum likelihood estimate of beta naught beta 1 and sigma square. So actually क्या आएगा, बीटा नॉट का जो एस्टिमेट आएगा we can write as b naught hat, that will be equals to y bar minus b1 hat x bar. ये जो पहले था वही आएगा, b1 hat की भी सेम आएगा, sxy by sx. I am just skipping the derivative part. Okay, so you will get that. Okay, so previously we have already solved some derivative to find the OLS estimator of b naught b1 etc. Okay, and we can also find the s square, right? So and s square will be like sum over yi minus b naught hat minus b1 x इसका whole square divided by n. That term will be our s square. Okay, so actually when we consider the MLE of this term, sorry कहाँ चला गया, हाँ, MLE of beta naught beta 1 sigma square, we get that the least square estimates or OLS estimate and the MLE of beta naught and beta 1 are identical. Okay, but the difference is where? In the sigma square term. So previously we have seen our S square, that S square was like हम लोग आज ही निकाला था इस स्क्वायर को RSS by n minus 2. Okay, and if you consider this S square, that S square or S square we can write MLE, that will be n minus 2 by n S square. Okay, so whenever we are talking about the MLE, we are missing the degrees of freedom part. Okay, so here we are getting the denominator is n, and in the OLS method we get that the degrees of freedom was n minus 2. That's why this result will come SML square, that is equal to n minus 2 by n s square of OLS. Okay, so look, B naught and B1 both are unbiased estimated of beta naught and beta 1. So B naught is okay, B1 is okay, but S square MLE is biased
estimator of sigma square, right? Why it is biased? Because we have 1 by n, right? So that's why it is a biased estimator of sigma square. So of course it is a asymptotically unbiased. Obviously, when n tends to infinity, that will come. Okay, so variance of s square mle, that will be less than variance of s square OLS. So because we are dividing with n, so obviously variance will be lower, right? So that thing we can keep it mind. Okay, so कभी कभी ये चीज जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है कि एक रिग्रेशन लाइन दे दिया, उसका एमएलई का जो प्रॉपर्टीज है, उसका ओएलएस का जो प्रॉपर्टीज, उसको मिक्स करके मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है? तो दैट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, हाउ टू डिटरमाइन द हाउ टू, मतलब कैसे निकालोगे तुम एमएलई का जो फॉर्म है, ये फॉर्म, ठीक है? फाइन. सो I hope ki this part is enough. Okay, for simple regression, simple linear regression estimation. Okay, now we move on to hypothesis part. Okay, so we have various parameters, sigma square, beta naught, beta 1. So we are going to test whether beta naught, beta 1, मतलब हमारा जो आएगा, जो रिजल्ट में जो आएगा, बीटा नॉट बीटा 1 आएगा, whether they are significant or not. Okay, so if they are not significant, तो उसका मतलब हम लोग अगर मॉडल में वो चीज इंक्लूड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. दैट्स व्हाई जब भी हम लोग यूज करेंगे कोई सिंपल लिनियर रिग्रेशन या फिर मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, in that case we always look at our p value of the particular parameter. Okay, so now we move on to that part. Okay, so first thing we consider for the slope parameter, right? Slope parameter. So what is our first part? Is first topic is to test beta 1, how beta 1 works. Okay, or how can we test the slope parameter? So first we consider the null hypothesis that the slope parameter is equals to some value. Okay, beta 1 equals to beta 1 naught. So some values for can be 0.5, 0.3, जो भी तुम्हारा यूज करना है मॉडल में वो तुम यूज कर सकते हो, या फिर 0. ओके, 0 मतलब देयर इज नो इफेक्ट of this particular variable. Okay, so there are two cases. One case is that sigma square is known. Another case is that sigma square is unknown. Why it is important? Because when we are going to use the expectation of some, अच्छे से ये चीज समझना होगा, when we are going to use expectation of b1, that is beta 1, and variance of b1, that is equals to sigma square by sxx. So we have to keep in mind that sigma square अगर known है, that in that case our variance is that sigma square by sxx, and sigma square अगर unknown होगा तो our variance will be changed. So why it is important? Because we are going to consider कि b1 should have some distribution. So what is the distribution of b1? Look, b1 is the linear combination of yi. हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, b1 was the linear combination of yi. So b1 should obviously follow normal distribution because yi follows normal distribution. हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि yi follows normal distribution. So that's why we can also write कि b1 also follows a normal distribution. So b1 follows normal distribution with obviously their expected value, their mean, and obviously the variance term sigma square by sxx. Okay,
So B1 follows this normal distribution. So since B1 is normal distribution, so we are going to test a normal random variable. So obviously we can use the test statistic for Z. So टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर अननोन होता तो हम लोगों ने टी टेस्ट कर लेता, ठीक है. सो z इक्वल्स टू, सो ऑब्वियसली वी नो द व्हाट इज z इज द, ऊपर में क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा b1 माइनस उसका जो ओरिजिनल वैल्यू हाइपोथेटिकल वैल्यू है वो होगा. तो हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या है, बीटा 1 नॉट, दिस इज द हाइपोथेटिकल वैल्यू. एंड नीचे में क्या होगा, उसका जो स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड, तो उसमें सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स variance term, ठीक है. So now that will distributed as normal 0 1 z, just z हमारा क्या होगा, normal 0 1 follow कर रहे हैं. So what should be our decision will be, we will reject h naught if our z, or we can write mod z, that is greater than z alpha by 2. So if the test statistic is greater than the critical value, then we will reject the null hypothesis. So if we reject the null hypothesis, that means जो हम लोगों ने जो hypothetical value सोचा था, that is not that the same, right? So if you are testing null hypothesis beta 1 equals to 0 and alternative beta 1 is not equal to 0 and we reject the null hypothesis, that means there is a significant amount of slope parameter. So if we consider y equals to beta naught plus beta 1x, this model, if we consider this model, the rejection of the hypothesis signifies that we have to consider x as our independent variable. X is important, mostly x is important. अगर hypothesis reject हो रहा है, इसका मतलब है x important है. So that's why this test is very much important for beta 1. Okay, so obviously we can find the confidence interval using our uh, mean and variance term. So confidence interval for beta 1, that will be b1 minus z alpha by 2 root over sigma square by sxx. This is the lower confidence interval, and upper confidence interval होगा b1 plus z alpha by 2 sigma square by sxx. ये कॉन्फिडेंस इंटरवल याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोगों को, अगर बहुत बार, 2-3 बार तो मैंने देखा या गेट में आया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, ठीक है, लोअर लिमिट निकालने दिया, कभी कभी एमसीक्यू में दे दिया, हाँ, कि सिग्मा दे दिया, एसएक्सएक्स दे दिया, सब कुछ देके बोला कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है. ओके, सो दिस इज द केस फॉर व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन. हम लोगों को सिग्मा स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन पता है. अगर अननोन होगा तो क्या करेंगे हम? सो इन दैट केस our residual sum of squares by sigma square क्या follow कर रहा है? Chi square in minus 2. So using that we can take, or we can consider expectation of r. So जो ये जो टर्म एक्सपेक्टेशन का अंदर जो टर्म है RSS by n minus 2, that is the t, or you can say the unbiased estimator of sigma square, right? So ठीक है, okay, fine. So in that case we are going to use our RSS by n minus 2 in terms of sigma square. So obviously we can't use z or standard normal variable, so we are going to use the t distribution or t, and we can write b1 minus beta 1 naught divided by root over sxx, sorry, not sxx, it should be like क्या होगा, it should be our RSS by n minus 2 into sxx, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट सिग्मा स्क्वायर के जगह RSS by n minus 2 लिया है. So that term will follow t distribution, and उसका degrees of freedom कितना होगा, n minus 2, because we have n minus 2 degrees of freedom for the residual sum of squares. So इसका जो distribution होगा
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो भी T with DF equals to 2 फॉलो करेगा, right? So we can compare with the T table, T distribution table, and we can also either accept or reject the null hypothesis. Okay, right? So in that case, we have also the confidence interval. So ये भी बहुत ही जो भी हमारा टी स्टैटिस्टिक्स है उधर से ही आ रहा है, देखो B1 माइनस T distribution with degrees of freedom n minus 2 comma alpha by 2, right? And the remaining term will be RSS divided by n minus 2 SXX, and the upper confidence limit will be B1 plus n minus 2 comma alpha by 2 into RSS by n minus 2 SXX. So this is the confidence interval for beta 1 when sigma square is unknown. ओके सो क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि सिग्मा स्क्वायर नोन है या फिर सिग्मा स्क्वायर अननोन है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, ठीक है, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों ने स्लोप का जो पोर्शन था हम लोगों ने कर लिया है। अभी जो इंटरसेप्ट वाला टर्म है, इंटरसेप्ट टर्म, इस टर्म के बारे में बात करते हैं। इसका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा वो कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका भी दो केस हो सकता है। केस 1 सिग्मा स्क्वायर इज नोन एंड केस 2 सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो पहले हम लोगों ने जैसे किया कि सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो कैसा होगा, नोन होगा तो कैसा होगा, इधर भी हम लोगों ने ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। सो पहले जब सिग्मा स्क्वायर नोन होगा इन दैट केस सिंपली हम लोगों के पास एक्सपेक्टेशन ऑफ B naught है, that is beta naught, so unbiased estimator, since they are unbiased estimator so we can write that, and variance of B naught ये भी हम लोगों ने काल किया था sigma square 1 by n plus x bar square by sxx, so this term is sorted, okay, variance and expectation. So we also know that B naught is the linear combination of a normally distributed random variable, right? Because B1 B naught कहाँ से आता है, B1 से आता है ना। So since B1 is linear combinations and also B naught should also be a linear combination of yi. So in that case our z will be equals to B naught minus beta naught divided by, suppose we are considering null hypothesis equals to beta naught equals to beta naught naught, suppose beta naught naught, okay. So that is the z, value of z divided by sigma square 1 by n plus x bar square by sxx. So that term is quite easy to calculate if we have the values of the all the x bar sxx जो भी है अगर हमारे पास है तो हम लोग निकल सकते हैं। So that will be followed normal 0,1. ओके, कभी कभी हो सकता है कि तुम लोगों को क्वेश्चन में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो भी निकलने के लिए बोल सकते हैं। एक नंबर के लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, नेट का प्रॉब्लम होता है, उसमें कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू कीप इन माइंड this thing, okay. So of course we can also find the confidence interval of beta naught. So what is the confidence interval? B naught minus z alpha by 2 into sigma square 1 by n plus x bar square by sxx. It is the lower limit, and upper limit will be b naught plus z alpha by 2 sigma square 1 by n plus x bar square by sxx. ये जो टर्म होगा that is our confidence interval for beta naught. So of course we can use the formula for calculating the confidence interval when sigma square is known. जब sigma square is known होगा तभी हम लोग यूज कर पाएंगे। But what if the sigma square is unknown? So जब sigma square known नहीं है, unknown है, in that case we are going to use the formula of RSS by n minus 2. Same thing, okay, हम लोगों ने जैसा कि B1 पे किया था ऐसा ही हम लोगों ने इधर भी B नॉट का केस भी करेंगे। तो in that case that will follow T distribution with the that is equals to B naught minus beta naught naught divided by
root over is RSS by n minus 2 into 1 by n plus x bar square by sxx. That is सेम थिंग, मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये वाला चीज याद रखना है कि जब हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर अवेलेबल है, we are going to use sigma square in the formula, otherwise we can't use sigma square. So in that case we will use the estimate, the unbiased estimator of sigma square, that is our residual sum of squares divided by n minus 2. So that will follow t distribution with n minus 2 degrees of freedom. Okay, so obviously if it is greater than the critical value, then we will reject the null hypothesis, and if less than this, then we are going to accept that or no, fail to reject that. So the thing is here we have an interpretation. Okay, what is the interpretation? Suppose we consider a null hypothesis, that is beta naught equals to beta naught naught, and alternative beta naught equals to not equals to beta naught naught. So suppose beta naught naught equal to 0, and in that case, suppose in that case we arrive at a decision that कि हमारा जो hypothesis है that is fail to reject है, मतलब we are going to accept the null hypothesis. So what is our null hypothesis? So that basically we can't say we are accepting the null hypothesis, we only say that we fail to reject the null hypothesis. This is statistically wrong to say accepting a null hypothesis. So basically if we fail to not reject the null hypothesis, we are considering b not equal to 0. So that means there is no significant to keep intercept term in our model. मतलब हम लोग जो सोचे थे कि बीटा नॉट का वैल्यू कुछ होगा, वो नहीं आ रहा था, वो 0 आ रहा था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद दिखा रहा था कि it may be 0. Okay, that means we do not have any significance in the intercept term. So ultimately if that happens, we can say it is a no intercept model. मतलब intercept term ही तो नहीं नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि accept हो रहा था, reject नहीं हो रहा था, that's why. So ये वाला interpretation याद रखना कि if this happens, okay, if fail to reject होता है, तो हमारा जो intercept होगा वो मॉडल से निकल जाएगा. So suppose we are considering y equals to 0.5 plus 0.3x, ये हमारा रिग्रेशन लाइन था, ठीक है. एंड देन हम लोगों ने बीटा नॉट का टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद देखा कि बीटा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. सो ये जो वैल्यू है ये हमारा मॉडल पे निकल जाएगा, और टू यूज द स्पेसिफिक रिग्रेशन मॉडल वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग ओनली. ओके, so this is the interpretation. Okay, fine, let's go to the previous one. So in that case if we consider the confidence interval, so इधर हम लोगों ने confidence interval को निकाल लेते हैं, तो क्या होगा b नॉट माइनस t. t क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर इज अननोन. ओके, t n माइनस 2 अल्फा बाई 2 होगा इंटू रूट ओवर ss रेसिडुअल ss डिवाइडेड बाई n माइनस 2 इंटू 1 by n plus x bar squares by sxx, comma b naught tn minus 2 alpha by 2 root over rss by n minus 2 into 1 by n plus x per square by sxx. तो ये टर्म भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं पता है? इसको जस्ट मैं एक ही वन सिंगल चीज में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार सेम डेरिवेटिव डिराइव करने से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है. हम लोगों को इतना कॉन्सेप्चुअल चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इंटरवल ही चाहिए ना, तो कहाँ से आता है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत. So basically what happens, we consider an interval that is probability of so t distribution for alpha by 2, and we can have that thing. Okay, so t should be less than equals to this thing, and
if we consider like t less than tn minus 2 minus 1 minus alpha by 2, that thing should be 1 minus alpha. Okay, so that means ये जो t है इस जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, b नॉट माइनस बीटा नॉट नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर एस एक्स आर एस एस बाई n माइनस 2 इंटू 1 बाई n प्लस एक्स वर्ग स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स। तो इसको यूज करके हम लोगों को मतलब ये जो टर्म है अगर अगर हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, that is the thing, that is called the 100 into 1 minus alpha percent confidence interval. So if alpha equals to 0.05, that means we are finding 95% confidence interval. So in t distribution, which is like this, 1 minus alpha means here we are having alpha by 2 and here we are having alpha by 2. So the remaining part, that term is 1 minus alpha. So that is why we are considering 1 minus alpha in our formula. So that's why that is 100 into 1 minus alpha percent. If alpha is 0.05, we are considering 95% confidence interval for b naught. Okay, so I hope कि हम लोगों ने दोनों हम पैरामीटर्स को चेक किया, b naught चेक किया and b1 को चेक किया. We also have another thing, that is our sigma square. So hypothesis testing for sigma square. Okay, so basically ये भी सेम ही है, but we consider that null hypothesis is sigma square, that is equals to sigma naught square, against the alternative is sigma square is not equal to sigma naught square. So this is the hypothesis testing, or we can consider that thing. Okay, so previously we have seen that RSS by sigma square that follows chi-square distribution with degrees of freedom n minus 2. So using that we can easily find the hypothesis. Okay, so this is our test statistic. Basically RSS by sigma square is our test statistic. So it will follow chi-square distribution. So we can write probability of chi-square n minus 2 comma alpha by 2 less than equals to RSS by sigma square less than equals to chi-square n minus 2 1 minus alpha by 2, that is equals to 1 minus alpha, जो मैंने पहले भी तुम लोगों को दिखाया. So that means we are having a confidence interval 2 comma alpha by not alpha by 2, so 1 minus alpha by 2 and comma RSS by chi-square confidence interval for sigma square. ये भी तुम लोगों को थोड़ा मतलब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली ये भी चाहिए होता है. ठीक है, और एक और चीज है कि what will be the joint confidence interval for b naught and b1. Okay, so there is a joint confidence interval for, you can write like this, joint confidence and beta 1. Okay, so basically तो हम लोगों ने अभी तक दोनों चीज देखा है कि बी नॉट का एक कॉन्फिडेंस इंटरवल था, बीटा 1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल था. ठीक है, so if we consider both thing together, okay, so in that case we will have a joint confidence interval in a ellipsian region. Okay, so that is quite heavy to us actually. That is I think this is not very much required, but the form I am going to write, that just keep it in your mind, what is the form. So if we have
b naught minus beta naught divided by sigma square and plus b1 minus beta 1 by sigma square by sxx, and it is sigma square by n. Actually we are considering the variance term and the mean term. Okay, so that sum will follow a chi-square distribution with degrees of freedom 2. Okay, so obviously this squares of this square of this. So here b1 is our um, slope parameter, b naught is our intercept parameter. So this thing is chi-square 2, degrees of freedom 2. And for sigma we can write RSS by sigma square, that follows chi-square n minus 2. So if we consider the ratio between 1 and 2, we will get a F distribution. Okay, so ultimately that F distribution will have a quadratic form क्योंकि square है, एक quadratic form आ रहा है. So that quadratic form will be like QT. Okay, QT divided by ये जो RSS है ये पड़ा रहेगा, और सिग्मा स्क्वायर बोथ साइड जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर में सिग्मा स्क्वायर होगा, नीचे भी सिग्मा स्क्वायर होगा, निकल जाएगा, वो नहीं रहेगा. ठीक है, that will be a quadratic form QT, and residual sum of squares रहेगा. QT is like just if we take the summation of this, that will QT. Okay, so that will be equals to n into b naught minus beta naught उसका whole square plus sum over xi square b sum. Okay, plus sum, क्योंकि ये a square होगा, b square होगा, और 2ab हो गया. ठीक है, ये वाला टर्म रहेगा qt के लिए. Okay, you can derive that, but we are not required to have that leverage कि हम लोग उतना नहीं चाहिए, कभी नहीं आया है अभी तक. But since we are having कि देख रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, that's why we should acknowledge it. Okay, so that QT by RSS will follow a F distribution. Okay, so actually the confidence interval that will be n minus 2 by n, क्योंकि ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो होता है, and QT by RSS 2 comma n minus 2, दो DF होता है ना F distribution का, that's why, and 1 minus alpha. So it is the confidence in region or interval, we can say. Okay, this is the confidence interval basically. So it will be a like ellipse, the confidence interval that will be a ellipse. Okay, ellipse में आएगा एक, अगर तुम इसको एक ड्रॉ करने की ट्राई करोगे, जैसे कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा ही ellipse में आएगा. So that is थोड़ा आउट है अभी तक के लिए, अभी भी कभी ये चीज नहीं है, लेकिन we should acknowledge it, the joint distribution or joint confidence interval of beta naught and beta 1. Okay, next, and मुझे लगता है कि हम लोग जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आवर एनोवा हो गया, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वी कैन एंड द टॉपिक. ओके, सो एनोवा पे हम लोग स्टार्ट करते हैं. So basically what we are having a yi is our in our model, and the observations, right, and yi hat. So yi is our observed value and yi hat is our predicted value in the model. Okay, so we have the difference between this. So this is the residual, right? Residual is this. So if we consider the sum of squared residual, we can consider sum of square residual, can denote like sum of residual. Okay, so that is equals to sum of yi minus yi hat uska whole square, I equals to 1 to n. So if we write, that is equals to I equals to 1 to n yi minus y bar उसका होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, माइनस वाई बार प्लस वाई बार, एक्चुअली हम लोगों ने इक्वेट किया, दैट इज इक्वल्स टू सम
over I equals to 1 to n yi minus y bar होल स्क्वायर प्लस सम ओवर उसका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, और एक माइनस आएगा, माइनस है आगे वाई आई है, सो माइनस 2ab, 2ab का मतलब क्या है, i equals to 1 to n yi minus y bar into yi hat minus form of sum of squares of error. Okay, so that is equals to, अभी देखो, अभी जो ये जो पार्ट है, ये 2ab वाला पार्ट है, that always मतलब डिफिकल्ट करता है, ठीक है, तो इसको पहले साइड में निकाल लेते हैं 2ab वाला पार्ट. सो 2 into sum over yi minus y bar yi hat minus y bar, ये हमारा 2 yi hat को यूज किया, मतलब yi hat का वैल्यू क्या है, वैल्यू है कि वो जो हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू कहाँ से आता है, a प्लस b से, राइट. सो दैट विल बिकम सम ओवर yi minus y bar into b बार को भी चेंज किया, y बार के जगह y बार इक्वल्स टू b नॉट प्लस b1 x बार, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y बार इक्वल्स टू b नॉट plus b1 x bar and yi hat equals to b naught plus, so that is our form, so that is equals to 2 into और right b1, देखो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो आगे वाला टर्म है उसको भी हम लोग सेम वे पे ले सकते हैं, b1 स्क्वायर हो जाएगा सम ओवर xi माइनस x बार उसका होल स्क्वायर आ गया, और यू कैन राइट इट्स एस सम ओवर yi at माइनस y बार उसका होल स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट. आगे 2 है एक, सो हियर इफ वी यूज दैट थिंग yi hat माइनस y बार है उसका होल इक्वल्स टू, अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे ये क्या आ रहा है, सम ओवर yi माइनस y बार उसका होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक तो 2 हो गया और दूसरा माइनस है, दैट्स व्हाई आगे वाला टर्म से सब्ट्रैक्ट होके yi hat माइनस y बार उसका होल स्क्वायर, ये वाला टर्म आएगा. that is the thing. So basically what we are having, sum over yi minus yi hat उसका होल स्क्वायर, ये जो रेसिडुअल था, रेसिडुअल सम स्क्वायर जो था दैट इक्वल्स टू, कहाँ से आ रहा है, इधर से हम लोग इसका जो इक्वेशन है लिखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, yi minus y बार उसका होल स्क्वायर प्लस, नो नॉट प्लस, इट इज माइनस सम ओवर yi hat माइनस y बार उसका होल स्क्वायर एस y, तो टोटल उसका y का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं थोड़ा कलर चेंज कर दिखाता हूँ, ये वाला टर्म, दिस इज द sum of squares about the mean, okay, or you can say total sum of squares, मतलब कि जितना भी y है उसका वेरिएशन, मतलब वी कैन से लाइक सिग्मा स्क्वायर, राइट. तो ये टोटल वेरिएंस है, ये टोटल वेरिएंस को बार वेरिएशन का हम लोग दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक हो गया हमारा ये वाला और एक हो गया हमारा ये वाला. तो एक्चुअली ये जो टर्म है ये क्या है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, पहले भी हम लोगों ने कर चुके हैं कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का ये वाला फॉर्म आता है, हम लोगों को पता है, राइट. सो दिस इज द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड जो बाकी जो प्रोपोर्शन है
This term is called regression sum of squares, or you can say sum of squares due to regression. So जो second term है residual sum of squares है, that term residual sum of squares describe the deviation, that what is the deviation? The observation minus predicted value, or you can say residual sum of squares. और जो ये जो regression वाला term है, this term describe the proportion of variability. मतलब हम लोग जब रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, कितना वेरिएबिलिटी रिग्रेशन लाइन, मतलब एक रिग्रेशन लाइन यूज करके कितना वेरिएबिलिटी हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दैट्स द थिंग. सो दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ variability explained. दैट्स द होल पॉइंट कि हम लोगों ने जो टोटल जो वेरिएशन था y का, वो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया दोनों में. एक हो गया हमारा रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, एक हो गया हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. दोनों चीज हो गया, ठीक है. अच्छा, एक 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 सिंगल हम लोग फंडा बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन है, और रिग्रेशन लाइन का एक एक वैल्यूज सिंगल सिंगल पॉइंट पे जाके जाके पड़ रहा है. मतलब इट इज वेल फिटेड, completely well fitted, मतलब r equals to 1, there r equals to 1, and it is very much well fitted so that all the observations fall on the regression line. Here all the observations fall on the regression line. So in that case, what is our residual sum of squares? That is 0. ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि क्योंकि देखो हर एक जो पॉइंट है वो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वही हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ गया है पूरा. तो दैट्स व्हाई रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 इन दैट केस. बट व्हाट इज अबाउट sum of squares due to regression? That is equals to total sum of squares. क्योंकि ये जो ऊपर में जो हम लोग ने लिखा है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को दो तरह से डिवाइड कर ले, कि रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स एक सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन, since it is a very good fit, so that total sum of squares due to residuals is 0, we have this. So that is an interpretation. Someday might, if the question might come, so you can easily write this thing. Okay, so कभी कभी हो जाता है, आ सकता है सब क्वेश्चन, थोड़ा बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन, तो इस तरह से आंसर करना चाहिए, ठीक है. फाइन. तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोग जब एनोवा करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने शायद देखा होगा कि एनोवा में हम लोगों को चाहिए कि एक होता है कि विद इन सब्जेक्ट, एक होता है बिटवीन सब्जेक्ट. तो इसमें भी हम लोगों को दो तरह का रिग्रेशन मिल रहा है, ठीक है. एक मिल रहा है कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेसिडुअल. सो वी कैन फाइंड, also we can find the mean sum of squares, right? So हम लोग एक काम करते हैं, एकदम डायरेक्टली हमारा जो एनोवा टेबल होगा वही कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है. एक होता है कि वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन में क्या क्या होगा, एक होगा रिग्रेशन, एक होगा रेसिडुअल. सो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स हम लोगों को मिला है एस एस रिग्रेशन, एंड रेसिडुअल जो व्हिच इज इक्वल टू क्या है, हैट माइनस y बार उसका होल स्क्वायर. ये हमारा रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स. और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स मिला था हम लोगों को yi minus yi hat उसका होल स्क्वायर. So we have total minus y bar उसका होल स्क्वायर. So this is our total sum of squares. We can write like SYY. यही तो था SYY का मतलब कि हम लोग जब एकदम स्टार्टिंग में रिग्रेशन लाइन का जो OLS मेथड यूज कर रहे थे तब देखा था. तो it is our sum of squares. So we can find mean sum of squares.
sum of squares. So total जो df है एक regression line पे total df होता है n minus 1. So obviously there are n observations, so we have n minus 1 degrees of freedom because of the total deviation, that is sigma square. So 1 by estimate 1 by syy होगा. So here we are having a regression line y equals to beta naught plus beta 1x. Since there is one independent variable, so the df of regression is 1. मैं फिर से बता रहा हूँ एक important चीज है ये. Since we have one independent variable, so that's why degrees of freedom is 1. So बाकी जितना पड़ा रहा सारे होगा residual df पे चला जाएगा. Okay, so we can get mean sum of squares of regression and mean sum of squares of residual, and using that we can find f, which is ms regression by ms. This is the thing. So we can easily find the f statistic, and since we consider कि जो f distribution follow कर रहा है कि अगर greater than the critical value होगा, then we can say it is a significant. Okay, so basically हम लोगों ने जितना भी हम लोगों ने देखा कि f distribution यूज करके कि जो टोटल जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन मॉडल है, उसका कैसा मतलब उसका इन्फरेंस कैसा है. ठीक है, so there is one more thing to discuss about the total overall our overall model, that is called the goodness of fit, or you can use the r square. So r square now I hope सबने सुना ही होगा. So r square is nothing but the correlation, the square of the correlation. ये कैसे आता है कि इसका जो फॉर्मूला है, that formula is equals to 1 minus RSS divided by SYY. So we have the residual sum of square, we have the total sum of square, so we can have the R square. So that is also we can write like SS equals to SS regression by SS total. Okay, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So a fitted model, अगर एक मॉडल फिट कर रहे हैं हम लोग, a fitted model can be said to be good when residuals are small. कब स्मॉल होता है? ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल है, अगर बहुत छोटा होगा तभी गुड होगा, राइट? क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि एरर बड़ा हो. एरर जितना छोटा होगा उतना हमारा मॉडल बेटर फिट करेगा, राइट? सो इफ RSS is small, then हमारा R square increase करेगा, राइट? क्योंकि 1 माइनस है, राइट? So let me just so if RSS decreases or residual sum of square decreases, then R square will increase, right? So look, RSS is based on the residual. Okay, so measure of the quality of fitted model, that is also based on the residual sum of squares. Okay, so ये जो R square है इसको हम लोग बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली वन मोर थिंग इज दैट कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसका जो स्क्वायर होता है वही हमारा आर स्क्वायर होता है. बट ऑब्वियसली दिस इज ट्रू फॉर अ सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब कि हमारे पास one variable है that is independent, one variable is dependent. So when this case happens, only then we can use our correlation square. Okay, otherwise अगर multiple linear regression होगा, in that case we have ANOVA table, and using the ANOVA table we can find the R square. So R square is like that. Okay, so there is another one more term that is called the adjusted R square. Okay, so
So basically, when we have multiple number of independent variables, suppose we have p number of independent variables, then we use adjusted R square. Okay, so जब multiple regression में हम जाएंगे तब हम लोग देखेंगे वो चीज. But the thing is कि R square का जो value है basically कोरिलेशन का स्क्वायर है, राइट? सो एंड इधर भी जितना भी हम लोग देख रहे हैं तो R square कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. जो R square का वैल्यू है so that should always be lies between 0 to 1. Okay, R square can be equals to 0 and can be equals to 1 also. So R square का मतलब 1 क्या है? So R square का 1 मतलब 1 होने का मतलब यह है कि it is a good fit और you can say perfect fit, right? क्योंकि R square equal to 1 है तो R square जितना 1 के क्लोज जाएगा उतना बेटर फिट होता जाएगा. ओके, एक value of R square closer to 1 indicates a better fit. Okay, and a value of R square closer to 0 indicate a poor fit. तो ये जो बस एक इंटरप्रिटेशन हम लोग बोल सकते हैं कि R square का वैल्यू 1 कब होगा? R square का वैल्यू 1 तब होगा if residual sum of square is equal to 0. कब होगा? वो जो हमने दिखाया थोड़ी देर पहले, हर एक पॉइंट वो जो फिटेड लाइन है उसके ऊपर पड़ा है. So in that case, residual sum of square is equal to 0. That's why our R square is equals to 1. And R square का वैल्यू 0 कब होगा? मतलब 0 का मतलब हो कि बहुत पुअर फिट है. So basically अगर correlation coefficient is 0, so we have x and we have y and the correlation coefficient between x and y equal to 0. So you can say R square is 0. So it is a very poor fit. So in that case, residual sum of squares is equals to total sum of squares. जितना total sum of squares वही residual sum of square होगा. So basically ये कब होगा? मान लो we have a data set like non-linear data set. So non-linear data set को अच्छे से फिट नहीं कर सकता है. हम लोगों ने पास एग्जांपल भी देखा था कोरिलेशन में कि एक non-linear data set ले लो y equal to x square. So ये रिलेशन है लेकिन हम लोगों का वैल्यू लेके एक एग्जांपल हम लोगों ने किया था. You can consider x and y minus 2 minus 1 0 1 2 and 4 and the correlation coefficient between x and y you can get correlation coefficient equal to 0. Why it is 0? Because it is a non-linear relationship, as simple as that. Okay, so in that case when non-linear relationship is there we can get R square equal to 0. So R square equal to 0 means it is a poor fit. That means our linear regression model is not doing good, so we have to try different models, different maybe non-linear regression or another. Okay, so this is the thing to analyze how to analyze a particular linear regression model. Okay, so the one more thing is there. I hope we can end the class before one more thing to do. That thing is कि हम लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं y का जो y जो वेरिएबल है इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो we can also find a prediction interval. मतलब y का जो प्रेडिक्शन है क्या है? y hat है. So y hat का एस्टिमेशन कैसा दिखेगा? y hat का एस्टिमेशन कैसा दिखेगा ये हम लोगों को जानना है. So basically जो हम लोगों के पास क्या होता है कि एक रिग्रेशन लाइन है that is y equals to beta naught plus beta 1x plus epsilon. That is the linear regression line, and under this we have a fitted lines where b naught and b1 are the Weyer's estimators of beta naught beta 1. So we have expectation of y. Expectation of y क्या होगा? b naught plus b1x. That is our expectation of y. So we can also get the variance of y. तो variance of y भी हम लोगों को मिल जाएगा जो हम लोगों ने पहले किया था उसको यूज करके. So basically using that
can have the prediction interval. Sorry, ऊपर चला गया था. Interval. Okay. So if we are given a value of x equals to x naught, then expectation of y given x naught, इसका expectation होगा क्या? B naught plus, or sorry, not confidence, the prediction interval that is also coming from a distribution. Okay, जो भी हम लोग उतना difficult details में नहीं जाना चाहिए. Okay, the prediction interval, that thing will be mu hat minus z alpha by 2 into sigma square into 1 by n plus, and for the so mean term का कौन सा है? म्यू, जो mean term ये वाला है. This is our mu y given x naught, mu hat. Yes. Mu hat y given x naught. Just a minute. Yeah. Okay. लोग कहाँ थे? Just a minute. I think I lost the part जहाँ पे हम लोग कर रहे थे. Okay, just let me write here. बाद में देखा जाएगा. So basically, what was our mu naught? That is mu minus x, mu given x naught, that is equals to b naught plus b1x. तो ये जो टर्म था, ये हमारा बेसिकली म्यू का वैल्यू था. बस यही, ठीक है. और जो वेरिएंस का पार्ट था, दैट मींस द वेरिएंस ऑफ म्यू y given x naught, that was equals to variance of b naught plus b1x. That term will become sigma square into 1 by n plus x naught minus x bar whole square by sxx. ये वाला टर्म अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म आएगा. दैट इज द प्रेडिक्शन इंटरवल ऑफ द आवर रिग्रेशन. ओके, y का जो रिग्रेशन है, दैट इज द प्रेडिक्शन इंटरवल. सो ये इनफ है. मतलब सिंपल लिनियर रिग्रेशन के अंदर अगर हम लोग इतना टर्म कर लिया तो आई गेस ये इनफ है. And of course, one more thing, if sigma square is given, only then that will our confidence interval. If sigma square is not given, so in that case we are going to use, देखो ये जो sigma square है इसके जगह हम लोगों को वो जो sum of squares था उसको यूज करना है. So ultimately the variance of y given x naught, that will be MAC into 1 plus 1 by n plus x naught minus x bar whole square by sxx. That term will be our prediction interval. So when sigma square is not given, so in that case that will be our prediction interval. So I hope कि हम लोगों ने जितना पार्ट किया अभी तक ये इनफ है. मतलब हम लोगों को जितना चाहिए उसके लिए जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए ये इनफ है. इसके बाद और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कुछ नहीं है. बाकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए.
Hello.